this lecture we are going to discuss the effective mass of electron. So we know that the mass of an electron in a crystal is different from its rest mass. So that mass, increased mass, or you can just say that fictitious mass, is known as your effective mass. So from the de Broglie theory, we know that the electron, it behaves as a wave, so it will have the same velocity as a group velocity. So in the yesterday lecture, we know that the group velocity is known as d omega upon dk. So from de Broglie assumed that the electron behaves as a wave, or you can say that it behaves as a wave packet. So therefore the group velocity of that wave is known as your d omega upon dk. So this is the velocity of the electron, where omega is the angular frequency, and its relation to your energy is by de Broglie equation, that is h cross omega. This comes from Planck's law, that is h into omega, h into nu multiplied and divided by 2 pi. This is h cross, this is omega. So from here we can say omega is equal to E upon h cross. So V is equal to Vg. So V here is, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे तो हो जाएगा डी एच क्रॉस डी ई अपॉन डी के. सो इधर से वेलोसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी की टर्म में आ गए हमारे इक्वेशन 1, इक्वेशन 2. सो फॉर फ्री इलेक्ट्रॉन वी नो दैट for free electron energy is your h cross square upon 2m. बिकॉज कोई पोटेंशियल नहीं होगा, कोई फोर्स नहीं होगा, तो क्या होगा, वहाँ पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी. दिस इज द काइनेटिक एनर्जी पी स्क्वायर अपॉन 2m. पी इज इक्वल टू h cross square, therefore this is h cross square upon 2m. so differentiate this with k. So this will be 2k into h cross square upon 2m. So this will be h cross square k upon m. Putting into this, so we will putting this into this equation. So v will be 1 upon h cross square into h cross square k upon m. So this h cross cancel by this. This will be h cross k upon m. This is nothing but p upon m. P is equal to mb, v is equal to p upon m. So this is the velocity of the electron, free electron. So now we are talking about the when we electron moves into a crystal, so therefore its mass changes. So to discuss that, let us consider that electron moves in external electric field epsilon. So let us consider electron moves in external electric field epsilon, and when this field acts on the electron, so it accelerates the electron. So therefore the energy also changes. Suppose the electron accelerated by an amount dx in small amount time dt. So therefore electron gains the kinetic energy, or its kinetic energy increases by a small amount dE. So let us discuss that. So this is the gain in an energy by, this is the force acting on your electron, that is it is getting accelerated by an amount dx. So therefore its velocity also increases. So therefore we can say that if you divide by this by dt, because this is in small amount dt, so therefore this equation will be transformed into, that is epsilon is here is electric field, that is v. So therefore this equation is dE is equal to E epsilon v dt. So this is question number 4. So now, so by putting the value of v from this equation number 2, so by using equation 2 we have putting the value of this
V in terms of energy. This will be dE will be E epsilon B is equal to 1 upon H cross dE upon dk into dt. So this is equation number 5. So now here it is assumed that there is only one electron in the given brilliant zone, so therefore Pauli exclusion principle does not come into picture. Means Pauli exclusion principle मतलब अगर हमने एक एनर्जी सेल को फिल करना हो एनर्जी लेवल को, तो एक एनर्जी लेवल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं. सो तो वो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग उनके क्वांटम नंबर सेम नहीं होंगे, बिकॉज देयर इज ओनली वन इलेक्ट्रॉन, देयरफॉर पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल डज नॉट कम्स इनटू पिक्चर. सो from here what we can say, what we can calculate, so dEd will cancelled. So what we have, so this equation can be rearranged like this, that is जैसे हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं डी के अपॉन डी टी, के इधर चले गया डी टी इधर इस तरफ आ गया, तो ये आ जाएगा ई एप्सिलॉन अपॉन एच क्रॉस. दिस इज इक्वेशन नंबर 6 by simplifying. So this is dk upon dt is equal to E epsilon upon H cross. E is there, charge on the electron. So since we know that V is equal to, since we know that from equation number 2 1 upon H cross dE upon dk, that is energy, the rate of change of energy with your wave vector. Okay, so now since we know that when we apply electric field through an electron, it gets accelerated and there is some change in energy, that is energy is gained here and electron is getting accelerated. So therefore the amount of acceleration can be calculated from this equation. So therefore magnitude of acceleration, because vector quantity, तो मैं यहाँ पे magnitude of acceleration is dv upon dt, इसको accelerate करके यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा magnitude आ जाएगा, magnitude of acceleration. So this will be d square E upon dk square and ये ऐसे आ जाएगा dk upon dt. ये कैसे आएगा, ये आएगा 1 upon h क्रॉस स्क्वायर. तो इसको डबल डिफरेंशिएट करेंगे, टाइम से डिफरेंशिएट होगा, तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर डी ई टू डी टी इंटू डी के. तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर डी ई अपॉन, इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे के से, तो ये जाएगा ऐसे लिखते हैं इसको डी ई टू डी के मल्टीप्लाइड एंड डिवाइड बाय डी के. क्वेश्चन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. for this will be h cross, so this will be d upon dk स्क्वायर ये, और ये आ जाएगा dk अपॉन dt. तो इस तरफ से आएगा, इसको अगर हम डबल डिफरेंशिएट करेंगे, so this is question number 7. So now what I will do, I will put the value of this dk upon dt which I have calculated in equation number 6. So thus by putting the value of dk upon dt by using equation number 6, so the equation number 7 becomes dk upon dt is equal to E upon h cross. ये मल्टीप्लाई करके हमारे पास ये क्वांटिटी आ गई. This is equation number 8. So now we know that, since we also know that acceleration is equal to force upon mass, that is force mass into acceleration. Force is your electric force, that is E into electric field. Electric field यहाँ पे क्या है epsilon upon m. Question number 9. So by comparing question 9 by comparing question 8 and 9, we get that is E into, that is epsilon. इलेक्ट्रिक फील्ड को हम यहाँ एप्सिलॉन से यूज़ करें, बिकॉज एनर्जी भी आ रही है, तो देयर विल बी कन्फ्यूजन. therefore m, this will be into
एप्सिलॉन अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर डी ई अपॉन डी के स्क्वायर. So C cancels, therefore m will be here, that is s cross square, and this is dE upon dE यहाँ पे एनर्जी है अपॉन के स्क्वायर और s क्रॉस स्क्वायर. दिस इज द रेसिप्रोकल ऑफ dE अपॉन डी के स्क्वायर का reciprocal, where m is your m star. This is known as your effective mass. This is question number 10, and this is nothing but the curvature of curvature. This is represents the curvature. When you plot your E versus K, this is the curvature, and the mass, जितना ज़्यादा हमारा मास होगा उतना ज़्यादा क्या होगा, curvature होगा. So therefore this is the effective mass, that is s cross square into the reciprocal of d square E upon dk square. So now when we plot m star with respect to k, so there will be two values of m star, that is effective mass की तीन वैल्यू होंगी. So when you are at origin के पास होंगे हम, तब क्या होगा, वहाँ पे हमारा यहाँ पे क्या होगा, मिनिमा होगा. और मिनिमा के लिए कंडीशन क्या होगी हमारी, दैट इज हमारा जो कर्वेचर होता है डी के अपॉन डी स्क्वायर, दैट इज ग्रेटर देन 0. तो हेयर एम की होगी, ये पॉजिटिव वैल्यू होंगी. सो एम क्या होगा, हमारा एम स्टार विल बी पॉजिटिव. सो एट दिस ओरिजिन द एम स्टार हैज़ इफेक्टिव मास हैज़ पॉजिटिव वैल्यू. सो दैट मीन्स अगर हम बोलें कि हमारी जो इलेक्ट्रॉन अब डी ऑर्गुलर वेव की तरह बिहेव कर रहा है, तो मान लिया पोटेंशियल हमारा ऐसे है, तो यहाँ क्या होगा, ओरिजिन पे यहाँ से क्या होगा, वेव मूव कर रही है, तो वहाँ क्या होगा, सिर्फ फॉरवर्ड मोशन होगी. दैट मीन्स मास है, मास इस तरह मूव कर रहा है, दैट इज मास हैज़ पॉजिटिव वैल्यूज़. अगर फिजिकली सिग्निफिकेंस ऐसा है उसका मतलब, अगर मैथमेटिकल बोले तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा जो है कर्वेचर है, मैक्सिमम कंडीशन क्या है, इसका कर्वेचर क्या होगा, पॉजिटिव होगा. तो मिनिमा के लिए तो ये क्या होगा, इट इज़ हैज़ पॉजिटिव वैल्यू, तो एम स्टार क्या होगा यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू. मास इफेक्टिव मास हैज़ पॉजिटिव वैल्यूज एट that is minima, that is at origin. And when you are at the vicinity पे होगा, तो ये क्या होगा, it is a kind of a parabola. तो पैराबोला, तो इक्वेशन क्या थी वहाँ पे हमारी, इस टर्म पे इक्वेशन क्या होगी, एच क्रॉस स्क्वायर के स्क्वायर ऑन 2m. तो के स्क्वायर है तो क्या होगा, पैराबोला. सो पैराबोला पे अगर हम इसको डबल डिफरेंशिएट करें डी ई अपॉन डी के, तो क्या हो जाएगा 2k एच स्क्वायर के अपॉन 2m. सो ये कट गया, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, सॉरी ये हो जाएगा एच क्रॉस स्क्वायर के अपॉन m. और डबल डिफरेंशिएट करें तो कर्वेचर फाइंड आउट करने के लिए डी के स्क्वायर, तो ये हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन m, ये हो जाएगा. सो देयरफॉर ये कर्वेचर हमारा ये होगा. तो इधर अगर इसको एम स्टार में पुट कर दें इसमें, तो ये हो जाएगा एम स्टार विल बी एच क्रॉस स्क्वायर, तो ये उल्टा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एम अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर, एच क्रॉस स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर एम स्टार इज इक्वल टू एम. सो एट द विसिनिटी योर एम स्टार इज इक्वल टू एम. सो इफेक्टिव मास विसिनिटी में क्या हो जाएगा, वहाँ पे क्या हो जाएगा, इक्वल टू दैट इज मास ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन. And at this mean maxima, that is at inflection point, this is an inflection point, k is equal to k naught. क्या होगा हमारा ये जो मास है, और मैक्सिमम क्या होगा, मैक्सिमम पे कंडीशन क्या होती है, मैक्सिमम पे कंडीशन होती है, ये हमारा कर्वेचर क्या होता है, वो होगा नेगेटिव. मैक्सिमम पे कंडीशन होगी, तो यहाँ पे क्या है, ये नेगेटिव है, तो एम स्टार मीन्स एम स्टार हैज़ नेगेटिव वैल्यूज़. M star has negative value, that means effective mass is negative at your maxima or at your inflection point. अगर इसको हम फिजिकली इंटरप्रेट करें तो क्या होगा, बाउंड्री पे मतलब एज पे क्या होगा हमारा, ये रिफ्लेक्टेड पार्ट वेव का, या फॉरवर्ड पार्ट है, या क्या रिफ्लेक्टेड पार्ट क्या होगा, एज पे रिफ्लेक्टेड पार्ट ज़्यादा होगा और फॉरवर्ड पार्ट कम होगा. और बिल्कुल एज पे क्या हो जाएगा, बाउंड्री पे ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे. मीन्स इट जो वेव क्या होगी वो होगी, ये और इसको कैंसिल करें तो वेव क्या होगी हमारी, स्टेशनरी वेव होगी या स्टैंडिंग वेव होगी. तो मीन्स मास क्या होगा हमारा वहाँ पे,
it behaves that electron behaves as a mass of infinite mass, मतलब स्टेशनरी में तो मास बहुत ज़्यादा होगा, इनफाइनाइट होगा. सो एट दिस पॉइंट मास, इफेक्टिव मास इज इनफाइनाइट. सो इस केस को मैं इधर लिख सकता हूँ. सो thus from this curve we have that mass have three values, that is positive value at this point, and at the vicinity it have effective mass is equal to the normal mass, and there is another, that is at maxima. At maxima this curvature is your negative, the mass has negative value. मीन्स यहाँ पे क्या होगा, बाउंड्री पे स्टैंडिंग पे बाउंड्री में क्या होगा, रिफ्लेक्टेड पार्ट ज़्यादा होगा फॉरवर्ड पार्ट से, तो मीन्स इट बिहेव ज़्यादा, मास एज नेगेटिव वैल्यू, और ये फॉरवर्ड नेगेटिव डायरेक्शन में मूव करेगा, मतलब इस तरह मूव करेगा, रिफ्लेक्ट होगी वेव. एंड मतलब इधर से बाउंड्री से बिल्कुल थोड़ा सा पीछे क्या होगा कि वहाँ पे क्या होगा, तुम्हारा रिफ्लेक्टेड पार्ट और फॉरवर्ड पार्ट बराबर होगा. मीन्स इट विल बी हैज़ ए स्टैंडिंग वेव. स्टैंडिंग वेव मतलब तो इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करेगा. मीन्स यू कैन से दैट इलेक्ट्रॉन हैज़ योर इनफाइनाइट मास. So in this curve we have defined another quantity fk. Fk is your degree of freedom. Fk, we have defined fk is your degree of freedom. Degree of freedom, and for an electron it is given as, that is fk is equal to normal mass upon effective mass, thus it is given as m upon h cross square. तो इनवर्स में तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, सिंपल हो जाएगा, सिंपल कर्वेचर हो जाएगा. यहाँ पे कर्वेचर का रेसिप्रोकल, यहाँ पे कर्वेचर सिंपल इसमें आएगा. सो दिस इज इक्वेशन नंबर 11. So thus we have also plotted the your degree of freedom with respect to k. So it is obvious when m is large, m star is effective mass is large, fk is degree of freedom is small. So means यहाँ पे क्या हमारा इफेक्टिव मास पॉजिटिव था, मतलब ज़्यादा था, यहाँ जैसे ऊपर जाते इफेक्टिव मास क्या होता जा रहा है, नेगेटिव होता जा रहा है. सो इफेक्टिव मास यहाँ पे ज़्यादा है तो क्या हो रहा है, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है हमारा, कम है. ठीक है, नेगेटिव में डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हमारा नेगेटिव है. सो दस द पार्टिकल इज हैवी एंड व्हेन एफ के इज इक्वल टू 1 मीन्स दिस इज योर effective mass is equal to same, that is equal to your normal mass, that is electron is free. Thus this effective mass is a new concept which arises due to the interaction of electron wave packet with the periodic lattice. मतलब इलेक्ट्रॉन फ्री कब होगा, जब पीरियोडिक लैटिस में नहीं होगा, मतलब पोटेंशियल वहाँ पे क्या होगा, जीरो. बट पीरियोडिक लैटिस में क्या हो रहा है, पोटेंशियल में पीरियोडिसिटी है, देयरफॉर इलेक्ट्रॉन का मास भी क्या हो रहा है, वो चेंज हो रहा है. So thus in practical purposes we can say that अगर practical purposes में अगर इसका एग्जांपल है इलेक्ट्रो हमारा इफेक्टिव मास का, so we can say that in most conductors your m star is equal to m. For most conductors m star is equal to m because band is only partially filled. But in case of semiconductor and insulator your balance band and your conduction band is balance band क्या होगा हमारा, वहाँ पे filled होगा, and their effective mass plays an important role in conduction process. तो effective mass ज़्यादा किस केस में होगा, काम आएगा हमारे semiconductor और insulator के केस में. This is the last topic of this chapter, that is band theory of solid, which is the distinction between metals, insulators, and your extrinsic semiconductor. So for this let us consider an energy band which is filled up to this K1 at absolute zero temperature. So this energy states are filled up to this K1 and K1 is less than pi by a. जो K1 है किसके अंदर है, किससे कम है, ये हमारे फर्स्ट ब्रिलियन जोन के अंदर ही है, इससे कम है. So therefore in this case we are only interested in knowing the your equivalence to the free electrons to the, there are capital N number of electrons in this band, so therefore number of free electrons
the calculation number of free electrons, we are interested in that fact. So therefore let us consider there are capital N number of electrons in the band. So free electrons in the band is given as, so therefore free electron, or you can say effective number of electrons. Effective means free electrons in this band is given as summation of Fk. Fk is your degree of freedom, and since here Fk is degree of freedom, which is ratio of m upon m star, this is this is given as dE square upon dk square, and this is 1 by hk m upon h cross square. This is the degree of freedom. So now, so here the summation extends from over all occupied state in a band for वन dimensional crystal. वन dimensional ले रहे हैं बिकॉज कॉनी पैनी मॉडल से एक्सटेंड कर रहे हैं, वन dimensional crystal ले रहे हैं which is having length L. So the number of states in the interval dk is given as, ये पूरा स्टेट है तो इसमें हम क्या लेंगे, एक छोटा सा इंटरवल ले लेंगे. मान ली इधर से इधर ले लिया हमने, डी के इंटरवल ले लिया, तो उसमें कितने नंबर ऑफ स्टेट्स होंगे या नंबर ऑफ वेव फंक्शन हो गया, नंबर ऑफ स्टेट्स होंगे. सो देयरफॉर सो वन डायमेंशनल क्रिस्टल लिया तो हमने, मान ली जो हमारा फील्ड स्टेट है इसमें से हम क्या लिए, एक इंटरवल लिया हमने डी के, स्मॉल इंटरवल इन दिस फील्ड एनर्जी स्टेट्स बैंड में, एनर्जी बैंड में जो फील्ड स्टेट है इसमें से हम थोड़ा सा इंटरवल लिया हमने डी के. Therefore number of field states, you can say number of field states or number of states in this interval dk is given as, ये हमने पहले कैलकुलेट किया है, dn is equal to L upon 2 pi into dk. ये हमने ऐसे कैलकुलेट किया इसको, क्योंकि ये होता है हमारा n pi upon L. सो dk हो गया हमारा 2 pi लिया हमने इंटरवल, 2 pi n pi लो 2 n pi, so this will be 2 pi upon L into dn. So dk dn आ जाएगा हमारा L upon 2 pi into dk. इधर से ऐसे आ गया इस फॉर्मूले से. So therefore this is equation number 2. So these are the number of states in this interval dk. So because we know that for each energy state there are 2 electrons, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे स्पिन अप और स्पिन डाउन वाला. 2 इलेक्ट्रॉन होंगे बिकॉज पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल होगा. 2 इलेक्ट्रॉन लेंगे एक एनर्जी स्टेट में विच इज़ हैविंग क्वांटम नंबर दैट इज k एंड s. s इज इक्वल प्लस माइनस ये k एंड s होगा हमारा प्लस माइनस 1. तो हर एनर्जी स्टेट में एक स्पिन अप वाला और एक स्पिन डाउन वाला होगा. सो देयरफॉर इट इज़ मल्टीप्लाइड बाय 2. सो देयरफॉर इफेक्टिव नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स for this whole state, whole energy band will be, n effective will be 2 into dn into fk डिग्री ऑफ फ्रीडम बता रहा है फ्री इलेक्ट्रॉन्स की. therefore this will be L pi, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, L pi 2 कहाँ से कहाँ है, -1 to 1 minus k1 to k1 into fk into dk. So by using the property of integral, तो मैं इसको ऐसे ले सकता हूँ 2 into L upon pi. इंटीग्रल की लिमिट चेंज कर दी मैंने. So this will be 0 to k1. दिस विल बी fk dk. ये इंटीग्रल की प्रॉपर्टी है कि माइनस k1 टू k1, तो इसको हम क्या चेंज कर सकते हैं इंटू 2 इंटू 0 टू k1. ये माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, दिस इज चेंज इंटू 2 इंटू 0 टू इन्फिनिटी. सो देयरफॉर दिस इज एन इफेक्टिव. So putting the value of fk by using this value,
into this equation. Therefore this will be 2L upon pi into m upon h cross square 0 to k1. This will be d square E on dk square into dk. तो एक इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो क्या होगा, इंटीग्रेट कर देंगे तो क्या होगा, एक डेरिवेटिव कम हो जाएगा तो सिंगल डेरिवेटिव आ जाएगा. सो एन इफेक्टिव विल बी 2Lm pi h cross square. This will be dE upon dk at k is equal to k1. This is equation number 3. If our band is completely filled, that is पूरा फील्ड होगा तो इधर से इधर तक होगा, पूरा बैंड ही है ना, एक फर्स्ट लेंथ जो, तो पूरा फील्ड होगा तो क्या होगा, कंडीशन क्या होगी, k1 और k इज इक्वल टू प्लस माइनस पाई बाई ए. पूरे के लिए पूरा बैंड अगर हमारा फील्ड है तो उसके लिए कंडीशन क्या होगी, प्लस माइनस एन पाई अपॉन ए. सो अगर पूरा फील्ड है तो हमारा ये क्या, ये बड़ा कांस्टेंट क्या हो जाएगा, दिस विल बी 0. सो देयरफॉर डी अपॉन डी के इज इक्वल टू 0 मीन्स कांस्टेंट है के, तो क्या होगा, इसके साथ क्या होगा, एनर्जी की वेरिएशन क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी. सो हेंस आवर इक्वेशन नंबर 3 becomes, दैट इज एन, ये पूरे फैक्टर 0 है, दैट मीन्स ये 0 है तो ये क्या हो जाएगा, 0. देयरफॉर एन इफेक्टिव इज इक्वल टू 0. So which means that the number of free electrons in a completely filled band is 0. So now this is for insulator, this is valence band and this is conduction band. So in case of insulator there is no effective number of free electrons, so therefore all conduction band and valence band are completely filled or completely empty, and there is a band gap of 5 to 10 electron volt. In this case this is 6 electron volt, and it is impossible to excite any electron from valence band to conduction band. तो कंडक्शन कब होगी, जब इलेक्ट्रॉन बैलेंस बैंड से एक्साइट होकर कंडक्शन बैंड में जाएंगे. तो यहाँ पे बैंड गैप बहुत ज़्यादा है, तो देयरफॉर दिस इट इज़ इम्पॉसिबल टू एक्साइट एनी इलेक्ट्रॉन फ्रॉम बैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड. तो इस लोअर बैंड को बैलेंस बैंड बोलते हैं, उसको बोलते हैं कंडक्शन बैंड. सो नाउ all the bands are either completely filled or empty at any temperature, so external electric field cannot produce any current, because current produce इलेक्ट्रॉन अगर एक्साइट कैसे करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड देंगे या थर्मल एनर्जी देंगे. तो इस केस में बैंड गैप बहुत ज़्यादा है, सो देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड दे के यार थर्मल हीट प्रोड्यूस करके भी क्या होगा, करंट प्रोड्यूस नहीं होगा. सो देयरफॉर कंडक्टिविटी इन सच मटेरियल्स under ordinary condition is 0. So therefore these are known as insulator. So this is the band representation of air insulators. So now for other materials, when the band gap between conduction band and valence band and conduction band is approximately equal to 1 electron volt, so therefore इलेक्ट्रॉन को हम इधर से इधर एक्साइट कर सकते हैं, बिकॉज बैंड गैप का हम इलेक्ट्रिक फील्ड दे के या हीट दे के हम क्या कर सकते हैं, इसको इन इलेक्ट्रॉन को इधर से इधर एक्साइट कर सकते हैं, बिकॉज ये क्या फील्ड स्टेट है, ये फील्ड स्टेट होगी और ये क्या होगी, एम्प्टी होगी. सेमीकंडक्टर के केस में ये होगी फील्ड, ये होगी एम्प्टी. बैलेंस बैंड क्या होगा, हमारा फील्ड होगा, और कंडक्शन बैंड क्या होगा, हमारा एम्प्टी होगा. तो उन मटेरियल को हम क्या बोलते हैं, सेमीकंडक्टर, जिनमें बैंड गैप क्या होगा, अप्रॉक्सीमेटली 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो इस केस में हम थर्मल एनर्जी दे के या इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे के इलेक्ट्रॉन को इधर से इधर एक्साइट कर सकते हैं. देयरफॉर देयर विल बी सम करंट विल बी देयर. सो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे क्या होता है, हमारा कम्प्लीटली फील्ड होता है और ये कम्प्लीटली एम्प्टी होता है एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे. सो एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर सेमीकंडक्टर बिहेव्स एज एन इंसुलेटर, बट नॉर्मल कंडीशन में रूम टेम्परेचर में थोड़े से इलेक्ट्रॉन इधर से इधर. तो कंडक्टर में क्या होता है, रूम टेम्परेचर पे क्या होगा, थोड़े से इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल लिमिटेड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इधर से इधर एक्साइट हो जाते हैं. सो देयरफॉर देयर इज वेरी स्मॉल नंबर ऑफ करंट, कंडक्शन करंट इज देयर
बट अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और थोड़ा सा थर्मल एनर्जी देंगे तो क्या होगा, इसमें से कंडक्शन प्रोड्यूस हो जाती है. सो देयरफॉर वी कैन से दैट in case of your semiconductors, so as temperature increased, more and more electron cross over from conduction valence band to conduction band and conductivity increases. अगर इसके एग्जांपल देखें हम सेमीकंडक्टर की, तो जर्मेनियम एंड सिलिकॉन. तो जर्मेनियम में बैंड गैप होता है हमारा कम होता है 0.78 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और सिलिकॉन में क्या होगा 1.21 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. सो नाउ अब अगर हम कंडक्टर की टर्म में बात करें, तो कंडक्टर में दो तरह के आप बोल सकते हैं कंडक्टर होते हैं, उनका दो तरह का बैंड स्ट्रक्चर होता है. एक में क्या होगा, हमारा बैलेंस बैंड क्या होगा, कम्प्लीटली फिल्ड होगा, और कंडक्शन बैंड क्या होगा, दैट इज़ पार्सली फिल्ड. और उनके बीच में बिल्कुल स्मॉल क्या होगा, स्मॉल बैंड गैप होगा. तो उस तरह के जो हमारे मेटल होंगे या कंडक्टर होंगे, उसमें से उसके एग्जांपल लिथियम, सोडियम एंड योर पोटाशियम एक्सेट्रा. और एक होगा हमारा दूसरी तरफ के कंडक्टर क्या होंगे, जिनमें क्या होगा, हमारा बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड क्या होगा, दैट इज़ ओवरलैप्ड, और वहाँ पे बैंड गैप क्या होगा, बिल्कुल जीरो होगा. सो इन दिस केस द इलेक्ट्रॉन्स इन द बैलेंस बैंड आर फ्री टू मूव इनसाइड द crystal lattice. Thus, the electron, under the influence of small applied field, acquire additional energy and move from higher low to higher states. So thus these mobile electrons जो इधर से इधर मूव करें, these mobile electron these conduction electron constitute the current. और इस केस में जो सॉलिड या कंडक्टर होंगे जो इस तरह का बैंड स्ट्रक्चर पोजेस करते हैं, उसकी एग्जांपल है बेरियम, कैडमियम एंड जिंक. So thus you can say that these band structure plays an important role in determining the nature of your solid. That is, either solid is insulator, semiconductor, or conduction, depending upon their band structure. So band structure consists of two bands, that is valence band and conduction band. Lower band is valence band and conduction band is upper band is conduction band. So the gap between these energy gap between these conduction band and valence band is known as your band gap. So this is all about your band theory of solids.